మా స్కూల్ సైన్స్ ఫేర్ కు లిమ్కా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ సాధించింది. నా పెద్ద మనవరాల్ని అన్ని వసతులతో క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ అందిస్తున్న స్కూల్లోనే జాయిన్ చేశాను. ఏ స్కూల్ సార్ అది? ఉల్లంపర్రు మాంటిసరీ స్కూల్. క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ లో నెంబర్ 1, కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ లో నెంబర్ 1, స్పోర్ట్స్ లో నెంబర్ 1, క్యాంపస్ లో నెంబర్ 1. చదువులో, తెలివితేటల్లో, ఆలోచన విధానంలో, నాయకత్వ లక్షణాల్లో వారు ఏ రంగంలో ముందున్నారో గుర్తించి విజేతలుగా నిలపడమే ఉల్లంపర్రు మాంటిసోరీస్ ప్రత్యేకత. పాలకొల్లు పట్టణంలో ఉన్నత విద్యతో పాటు భవిష్యత్తులో బాగా సెటిల్ అవుతున్న వారిలో అత్యధికులు ఉల్లంపర్రు మాంటిసోరీస్ విద్యార్థులే. ఇలా అన్ని ఉన్న చోట మన పిల్లల్ని చదివిస్తేనే వాళ్ళకి మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది. ఇక నుండి ఏ పిఆర్ఓ చెప్పినా వినను. ఉల్లంపర్రు మాంటిసోరీస్ లోనే చదివిస్తాను. మీ పిల్లల బంగారు భవిష్యత్తుకు మాది బాధ్యత. అడ్మిషన్ల కొరకు సంప్రదించండి మాంటిసోరీస్ విద్యా సంస్థలు ఉల్లంపర్రు. ఫోన్ 222206. బ్రాంచెస్ రామారావుపేట. ఫోన్ 224200. కొడిగట్టు. ఫోన్ 228800. Hi children, this is Usha. Today I am going to say 10th class lesson non-detail शांति की राह में. शांति यानी peace, the way of peace. Or to reach up to the peace, how can we achieve peace? The way of peace. So today I am going to say this lesson non-detail lesson it is ये उपवाचक पाठ है. non-detail यानी उपवाचक. ये उपवाचक पाठ है और दुनिया के सारे वैभव और सुख सुविधाएं हमें मिलता है, लेकिन हमारे जीवन में शांति नहीं है तो सारे सुविधाएं या सुख संतोष इससे कोई उपयोगिता नहीं होता है. ये सारे सुख साधन व्यर्थ हो जाता है. शांति के बिना ये सब व्यर्थ है हमारे जीवन में. या दुनिया के सारे लोग, महान लोग जो भी कार्य करते हैं उसका अंतिम लक्ष्य या उद्देश्य होता है शांति. It means that in the world all the comforts and everything is available for us, but there is no peace in our life. Means all those comforts will be waste in our life. In the same way, in the world, whoever are working great works, they are having those works to their goal and achievement is only to get peace. Many organizations are being worked under it to achieve their अंतिम लक्ष्य होता है शांति. Their ending aim will be only peace. So ये शांति क्या है? What is the meaning of peace? मुख से चुप रहने से क्या यह शांति बन सकता है? Means being silent without talking a single word, sitting silently is a peace? No, ये शांति नहीं है. So मुख से चुप रहने से शांति नहीं होता है, लेकिन मन को नियंत्रित करने से, अपने मन को नियंत्रित करके उसे बुराई के रास्ते पर जाने से रोकना ही शांति का सच्चा अर्थ है. It means that being silent is not the peace. To make our heart to go in a or to control ourselves and go in a correct path is known as, and then we can achieve peace. That is the real peace in our life. So ये शांति मिलने से जहाँ शांति होता है दुनिया में वहाँ हमें वही सुख है. जहाँ सुख होता है वही स्वर्ग है. जहाँ स्वर्ग होता है वही दुनिया का श्रेष्ठ स्थान है. Means that where there is peace, then there only we will have the happiness in our life. Where there is happiness, that is only the heaven in our life. Means that which is the heaven, that is only the best place in the world. It means that जहाँ शांति है वहाँ हमें सुख है. जहाँ सुख है वही स्वर्ग है. जहाँ स्वर्ग है वही दुनिया का श्रेष्ठ स्थान है. Where there is a peace, that is the best place in the world. तो धन दौलत से दुनिया में हम कुछ भी कर सकता है, कुछ भी खरीद सकता है, लेकिन शांति को नहीं खरीद सकता है. दुनिया में जो भी वस्तुएं मिलता है हम धन दौलत से खरीद सकता है, लेकिन हमारे जीवन में शांति पाने के लिए ये कहीं बाहर नहीं भेजा जाता है. ये तो हमारे हाथों में ही है. दुनिया के संसार में सभी देशों
शांति पाने के लिए, अपने देश की शांति पाने के लिए, दूसरे देशों पर शांति बनाए रखने के लिए युद्ध करने के लिए तत्पर हो रहा है। यानी अपने देश की शांति के लिए दूसरे देश पर युद्ध करने के लिए तैयार हो रही है। ये युद्ध करने से शांति नहीं मिलता है। It means in the world, every country is trying to get ready to fight with other country to make peace in their country. But by fight or by wars, they can't get the peace. This peace in their country, they can get it by दूसरे देशों से चर्चा करके या सहयोग करने से हम अपने देश की शांति मिल सकता है। It means when we talk each other or when we discuss, when two countries discuss each other or when they have coordination between the countries, then there will be no need of war to achieve the peace. Then we can get the peace in our countries only by having the coordination and mutual understanding between the countries. So इसी उद्देश्य की स्थापना के लिए यानी संसार में शांति लाने की उद्देश्य में ही 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया है। It means to achieve this aim, the peace. They had in the world it was being introduced संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। They had developed संयुक्त राष्ट्र संघ in 24th October 1945. So it is संयुक्त राष्ट्र संघ means UNO. So it was formed to bring peace in between the countries. यानी एक संसार की सारी देशों में शांति की राह को देने के लिए ही ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य, यूएनओ का मुख्य उद्देश्य है विश्व शांति, यानी दुनिया में सारे देशों में शांति लाने के लिए ही इस संस्था की स्थापना किया गया है। Means that to bring peace in all over the world, only this organization is being started. So दुनिया में, संसार में उत्कृष्ट कार्य करने वाले यानी जो भी उचित कार्य करता है उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है इस यूएनओ की संस्था के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो भी महान कार्य करता है देश दुनिया में, उन लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है हर वर्ष। सो इन महान व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार 6 प्रकार की विधियों में दिया जाता है, उनमें शांति एक है। सो जो भी महान कार्य दुनिया में महान कार्य करता है उनमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इट मींस whoever does the greatest work in the world for the sake of the countries, they will be awarded the Nobel Prize. So इस प्रकार की नोबेल पुरस्कार पाने वाले कई लोग हमारे दुनिया में हैं। कई लोगों ने अपने कार्य से वे नोबेल पुरस्कार को हासिल किया है। उन महान हस्तियों में महान कार्यों ने करने के कारण ही उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उन महान व्यक्तियों में आज हमारे इस शांति की राह पाठ में 2 व्यक्तियों के बारे में बताऊंगी। सो उन 2 व्यक्तियों कोई नहीं है नेल्सन मंडेला और मदर टेरेसा। इन दोनों की उत्कृष्ट कार्य के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। Means in the world whoever does the best work for the sake of the peace will be awarded Nobel Peace Award. And in this lesson it was being said about 2 persons, Nelson Mandela and Mother Teresa, who are being awarded the Nobel Peace Award. So इन दोनों ने अपने जीवन में शांति की राह में चलते हुए अपने जीवन में अहिंसा, शांति, सेवा और भाईचारे इन भावनाओं को लेकर वे अपने जीवन में आगे बढ़ाया और हमें आदर्शवान बना है। Means these 2 people, they had made in their life ahimsa. They had taken the qualities of ahimsa, non-violence, shanti, peace, seva, यानी सर्विस और भाईचारे, brotherhood. With these qualities, they had become the greatest people, whom we are being taking as a noble persons now. उन दोनों
महान व्यक्तियों में आज मैं तुम्हें नेल्सन मंडेला के बारे में पहले मैं बताना चाहती हूँ। फर्स्ट आई वुड लाइक टू से अबाउट नेल्सन मंडेला। और नेल्सन मंडेला दुनिया में विश्व प्रख्यात शांति दूता के नाम से प्रख्यात है। यानी he was very famous for the he was a very famous ambassador for the peace। उनका पूरा नाम है नेल्सन रोलिहला मंडेला था। His full name was नेल्सन रोलिहला मंडेला। एंड उनका जन्म, उस महान व्यक्ति नेल्सन मंडेला का जन्म हुआ 18 जुलाई 1918 में। उनका जन्म हुआ था 18 जुलाई 1918 में हुआ था। और वे उनका जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। वे दक्षिण अफ्रीका के मूल के थे। और he was born in 18th July 1918 in दक्षिण अफ्रीका। He belongs to दक्षिण अफ्रीका। ये नेल्सन मंडेला प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। दक्षिण अफ्रीका के ये प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति। He was the first, it means without the प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति, he was the black people who has worked as the first president in दक्षिण अफ्रीका। फिर इसके पूर्व, राष्ट्रपति बनने के पूर्व, वे सदियों से चलने वाले रंग भेद के विरोध करने वाले व्यक्ति है। यानी रंग भेद से दक्षिण अफ्रीका में जो भी विरोध चल रहा है उसका अध्यक्ष के रूप में वे लड़े थे। रंग भेद को, इस एबिगेशन को ही यूज्ड टू फाइट अगेंस्ट द रंग भेद। Means there are many problems in South Africa before about the color, white people and black people. He had worked there, he had fought there for the freedom of the black people. और वे दक्षिण अफ्रीका की नेशनल कांग्रेस में काम किया है। उनका नेशनल कांग्रेस में अध्यक्ष के रूप में काम करके वे रंग भेद के विरोध में लड़े थे। He had worked as the president in Africa National Congress in दक्षिण अफ्रीका and he had fought, he had given a allegation towards the fight here रंग भेद। So इस काम करने के कारण वे जो भी रंग भेद के लिए लड़ रहे हैं, इसके कारण उन्हें 27 वर्ष राबन द्वीप में कारागार में रखा दिया गया है। और वहां पर रहते समय उन्होंने कोयला खनिज का काम किया करते थे। Means because of the allegation which he is doing towards the color in South Africa, he was being imprisoned in Robben jail. In Robben Dweep, in the jail he was imprisoned and he was being imprisoned there for 27 years. And there he had worked in the Koile Kanik means coal mines. He had worked there as he was imprisoned in the jail. 1990 में श्वेत सरकार की समझौता के कारण नेल्सन मंडेला को उस जेल से रिहा कर दिया गया। और इस समझौता में उन्हें नए दक्षिण अफ्रीका का स्थापना किया गया है। He was the founder of New South Africa and after an agreement with the white people, white government in the Dakshin Africa, after an agreement, after his jail for 27 years in 1990, there is an agreement with the white government in Dakshin Africa and then the new South Africa was being developed there. रंग भेद के प्रतीक, ये नेल्सन मंडेला he was being called as रंग भेद के प्रतीक के रूप में माना जाता है। He was one of the noble person who had fought towards the color abrogation in the South Africa. नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नेल्सन मंडेला के जन्मदिन को संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके जन्मदिन को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। It means UNO has decided his birthday, Nelson Mandela's birthday, to celebrate as Nelson Mandela International Day. So from that time onwards, he is being that day, the date of birth of Nelson Mandela is being celebrated in this way. So उन्हें दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रपिता के नाम से पुकारा जाता है। He was called as
father of the nation. How we are having in our country, father of the nation is Gandhiji. Same way in Dakshin Africa, Nelson Mandela is called as Rashtrapita. He is the father of the nation for them. So ये लोकतंत्र के लिए स्थापना करके और उद्धार करता है. He was the founder of the democratic country in South Africa and उसका संस्थापक और उद्धार करता. He was the organizer and the developer of a democratic country in South Africa. So इन्हें दक्षिण अफ्रीका में मदीबा का नाम से पुकारा जाता है. मदीबा. He was called as Madiba in South Africa. What is the word of Madiba? मदीबा ये शब्द बुजुर्गों के लिए सम्मान के रूप में माना जाता है. It means the word Madiba in South Africa they will use for the great people who are being elders, who are being treated सम्मान के with respect they will use this word Madiba. On the respect of as a honor he is being called as Madiba in South Africa. And Nelson Mandela 250 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है. जो भी कार्य उन्होंने दुनिया में शांति पाने के लिए किया है या दक्षिण अफ्रीका में भी जो भी रंग भेद के बारे में विरोध किया है, इन सब के लिए उन्हें 250 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है. Means he was being awarded 250 more than 250 national and international awards for the work which he had done for the sake of the peace. 1993 में उन्हें नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न दिया गया है. In 1993 he was being awarded Nobel Peace Award and also Bharat Ratna. Bharat Ratna is the prestigious award which will be given in our country. It was being given to Nelson Mandela in 1993. 2008 में गांधी शांति पुरस्कार भी दिया गया है. नेल्सन मंडेला की जो भी कार्य करता है उनके लिए 2008 में हमारी भारत सरकार की ओर से गांधी शांति पुरस्कार भी दिया गया है. और नवंबर 2013 में उनका निधन हुआ था और he was passed away in 23rd November 2013. ये शांति दूता के नाम से प्रख्यात है. He was being famous for the ambassador for the peace. ऐसे महान व्यक्ति की निधन के बाद हम देश के दुनिया के सारे लोग उन पर श्रद्धांजलि समर्पित किया और उनकी संघर्षमय जीवन नेल्सन मंडेला की जो भी ये आनंद से उनका जीवन नहीं बिताया, बहुत संघर्ष उन्होंने अपने जीवन में पाया है. उन संघर्षमय जीवन से हमें ये संदेश मिलता है कि कोई भी चीज हमें मुफ्त से नहीं मिलता है, हम उसके लिए संघर्ष करना है और उन संघर्षमय जीवन से हमें शांति की राह की ओर किस प्रकार चलना है, किस प्रकार का दुनिया में हमें लड़ना है, इन सब विषयों को जान सकता है. So उनका निधन के बाद after his death he was being called as the ambassador for the peace and he didn't get anything very freely. He had worked many problems he has faced in his life and with his life we can know the way how we can face our problems in our life and what is the way of peace, how we have to go towards it, we can learn it from the information about Nelson Mandela. And next person in this lesson is Mother Teresa. About Mother Teresa का नाम से ही हमें ये पर्याय शब्द मिलता है कि शांति, करुणा, प्रेम व वात्सल्य. These are the synonym words for the name Mother Teresa. The name itself we can say take the synonym words शांति, करुणा, प्रेम व वात्सल्य. शांति यानी peace, करुणा यानी mercy, प्रेम love और वात्सल्य love and affection. Means these are the synonym names for the name Mother Teresa we can take. With this only we can understand how much great work she had done for the world. So ऐसे नाम मदर तेरेसा नाम उनका पूरा नाम है आग्नेस गोमशे बोजाशु तेरेसा. मदर तेरेसा का पूरा नाम her full name is आग्नेस गोमशे बोजाशु तेरेसा. So उनका जन्म हुआ है 26 अगस्त 1910 में.
और उनका स्वर्गवास हुआ है 5 सितंबर 1997. It means she was born in 26th August 1910 and passed away in 5th September 1997. मदर तेरेसा का जन्म और उनका स्वर्गवास का तारीख है ये. वे युगोस्लाविया में उनका जन्म हुआ था और ये युगोस्लाविया मूल की व्यक्ति है. लेकिन आगे चलकर सेवा की भावना के कारण उन्हें भारत की नागरिकता स्वीकार लिया है. So she belongs to Yugoslavia, but the things which are having it means the service which motivation of the service which she is having, because of that quality she was being adopted as the, it means the organizations which she is doing for the service, for that she was being adopted and given as the भारत की नागरिकता स्वीकार लिया, यानी Indian citizenship. She had taken the Indian citizenship for the service organizations which she was running. Actually she belongs to Yugoslavia, but she is now भारत की नागरिकता, Indian citizenship she had taken. So पहले उनका जीवन एक अध्यापिका के रूप में आरंभ किया था. Means first she had started her career as a teacher. लेकिन उनका सपना तो कुछ अलग है, but her dream is different from what she is doing. अध्यापिका के रूप में काम करता था, लेकिन उनको उससे संतोष नहीं मिलता था क्योंकि उनका सपना कुछ अलग है. Her dream is little bit different from what she is doing. उनका स्वप्न है कि अनाथों, गरीबों और रोगियों की सेवा करना है. Her dream is to serve the people who are not having any parents, or poor people and sick people. Her dream is that, but she was not satisfied by the work which she is doing as a teacher, and so she wants to start some more work for the service of the people. 1900 इसी उद्देश्य से 1950 में कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी का निर्माण किया गया है. For that only, to fulfill her dream, she has started in 1950 in Kolkata. She has started missionaries of charity, that is nothing but आगे चलकर उसका नाम है निर्मल हृदय. Now it is being called as निर्मल हृदय. वहाँ पर उनकी जो भी सपना है कि सेवा करना या दूसरों की अनाथों की रक्षा करना, इन सब विषयों को लेकर, सेवा की भावना को लेकर उन्होंने अपने जीवन चलाना शुरू किया है. 1979 she was being awarded Nobel Puraskar for the service which she is doing for the sake of the people. And same way in 1980 she was being awarded Bharat Ratna. In 79 she was awarded Nobel Prize, and same way in 1980 Bharat Ratna, which is the most important prestigious award which will be given in our country. So ये मदर तेरेसा सेवा की भावना को अपने मन में रखकर ये हमेशा कहा करते थे कि कथनी से करनी को अधिक महत्व कर देते थे. यानी she gives more and more importance for the saying that कथनी से करनी, कथनी यानी कहना, करनी यानी doing. Doing is more than saying. इसी उद्देश्य में वे हमेशा कहा करते थे कि ओंटों से प्रार्थना करने वाले ओंटों से सहायता करने वाला हाथ कहीं अच्छा है. ये उनका निधन है. ये उनका जो भी काम करता है उसके बारे में बताता है. यानी उनकी कथनी से करना, प्रार्थना करने वाले ओंटों से सहायता करने वाला हाथ कहीं अच्छा है. इसका अर्थ ये है कि instead of praying, doing is more important. It means doing service is more greater than by saying. और उसी मदर तेरेसा का करुणामयी साबित किया गया है और उन्होंने अपने जीवन में ये साबित कर दिया है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है. She had proved, करुणामयी मदर तेरेसा had proved that service to the God is nothing but service to the people.
मानव सेवा ही माधव सेवा. Service to the people is service to the God. So it was being proved by her, by the service which she is doing for the sake of the अनाथों, गरीबों और रोगियों. So उनकी सेवा की भावना को महान विचार, उत्कृष्ट कार्य, श्रेष्ठ परोपकारी के कारण वे महान व्यक्ति बने, जो आज भी हम उनकी निधन होने के बाद भी उनको हम याद करना के मुख्य कारण है उनकी महान विचार, यानी ग्रेट थॉट्स व्हिच शी इज हैविंग. She was being remembered until now, और उत्कृष्ट कार्य and the greatest work which she had done, और श्रेष्ठ परोपकार और दूसरों के लिए करने की जो भी भावना होता है, इन भावनाओं के कारण वे श्रेष्ठ बने हैं. She gives us the message which she had worked hard in her life is her great thoughts and her great behavior and the great work which she had done, and same way helping nature which she had served for the people. Because of these names only she was being called as Karunamayi, Mata Mother Teresa. So यह दिव्य ज्योति उनके निधन होने के बाद भी हमारे जीवन में एक दिव्य ज्योति के रूप में बनकर हमारे जीवन की एक वास्तविक मार्ग को दिखाया है. She has shown the way how we can pass in our life, what is the way to get the peace in our life, and she had shown in her life, and with this that is nothing but serving the people or making the service to or give the service to the people who are in need, poor people and sick people. Then that is the correct way to get the peace in our life. By her biography we can understand that. ये मदर तेरेसा के बारे में है. इन दोनों महान व्यक्तियों की जीवन कथन को सुनने के बाद हमें शांति की मार्ग पर किस प्रकार चलना है, ये शांति हमें बहुत उत्कृष्ट कार्य करने से ही हमें मिलता है. By doing our works, the great works only, we can get peace in our life. We can learn from these two persons. And इन परीक्षाओं में, हमारी 10वीं परीक्षाओं में, 10वीं कक्षा की परीक्षाओं में हमें आने की संभावना की प्रश्न ये है कि शांति का अर्थ क्या है. इस प्रकार की प्रश्न आने की संभावना है. And you can also get the question, प्रार्थना करने वाले ओंटों से कहीं सहायता करने वाला हाथ कहीं अच्छा है, इसका अदन का अर्थ क्या है. And this also the question which you can get. And another question, मदर तेरेसा के बारे में आप क्या जानता है, इस प्रकार की प्रश्न आने की संभावना है. Means these 3 type of questions are very very important for you. And इन तीनों प्रश्नों बहुत ही अधिक रूप से पढ़ने से तुम्हें अच्छा अंक मिल सकता है. धन्यवाद. ఉల్లంపూర్ మాన్సో స్కూల్లో అటు డిజీ క్లాసులు ఇటు ఐఐటి క్లాసులు సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ స్కూల్ నుండి 10 మంది డాక్టర్లు, 8 మంది చార్టర్డ్ అకౌంట్లు, అనేక మంది ఐఐటి ఎన్ఐటిలో చదివిన ఇంజనీర్లు ఉన్నారు. అంతేకాదు ఈ విద్యా సంస్థల్లో 10 రకాల కాంపిటీషన్ ఎగ్జామ్స్లోని విజయకేతనం ఎగరేశారు. 4 స్టేట్ ఫస్ట్లు, 40 టాప్ 10 ర్యాంకులతో పాటు 13 మంది గోల్డ్ మెడల్ సాధించారు. ఒత్తిడి లేని విద్యను అందిస్తూ అటు జాతీయ స్థాయి స్పోర్ట్స్ ర్యాంకులతో పాటు ఇటు ఎడ్యుకేషన్ ర్యాంకులు సాధిస్తున్న ఏకైక విద్యా సంస్థ ఉల్లంపూర్ మాంటిసోరీ స్కూల్.